बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन फॉर द मेडिकल स्टूडेंट, नॉन क्लिनिकल सेटअप्स, सेशन नंबर 3। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ैनबाज, जो सर फाउंडर हैं मेडिकल 360 के। और सर प्लीज़ आप ज्वाइन करें। ओवर टू यू सर। All right, thank you so much, Amish, for inviting me and arranging this session. It's been a very important topic, and many students, even doctors, contact me for in this regard that what are the options that we can choose uh, if we don't want to pursue in this field. What can be the non-clinical pathways or alternative pathways for the medical doctors? So this is why this is important. I will throw the light on all the aspects of it. So before diving into it, you may already know me. I am Dr. Mohammed Zain Abbas. I'm founder of this organization, and right now I'm doing my residency in pediatric surgery. Along with that, I am GMC and IMC licensed and have cleared MRCEM Part 1. So let's start our today's topic. The first question raises that why doctors explore non-clinical careers. As you can see on the screen, the first reason is the burnout and work-life balance. That is at the top. I often use this phrase in my usual communication that work-life balance is at the top. Why so? Why so? Because as a doctor, we work like a machine. We are forced to work like a robot, and the people don't care for us, the system don't care for us, and only the person that care for us is ourselves, only us. Even our seniors don't pay heed to our problems. So the eventually the outcome is the burnout, the overloading of the patients, the long lengthy calls of our clinical sites, the reprimands of our seniors, the non cooperative environment of our patients and attendants, all lead to burnout. Okay, and the other one is the work life balance. The second thing is the career growth and diversification. Many students, many doctors actually want to see the career and financial growth. As you know that in Pakistan, especially, we don't have a handsome pay, we don't have a handsome stipend for our residency as well. So, as a simple like to end the inflation rate, to meet the inflation rate, we need to explore some other options in order to find our other in order to meet our ends, in order to survive, in order to fulfill the needs of our family. So ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कैरियर ग्रोथ करें एंड डाइवर्सिफिकेशन इसमें शामिल हो जाती है. एंड द थर्ड वन इज द कंपटीशन एंड कंपनसेशन. एज यू नो that the oversaturation of the doctors and less seats lead to the competition, and eventually क्या होता है, एक सीट के ऊपर थाउजेंड स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं, वो एक सीट आती है और उस कंपटीशन से क्या होता है कि सीट तो एक को मिल रही है, बाकी जो 999 डॉक्टर्स हैं, व्हाट शुड दे डू, दे शुड एक्सप्लोर द नॉन क्लिनिकल पाथवेज, तो वो उस वजह से भी एक्सप्लोर करते हैं. The last one is the global and remote opportunities that are now available, like medical writing, health tech, consulting roles are largely location independent. Many humans, many doctors, and obviously they are human, actually want to do the remote jobs. वो अपने घर बैठ के काम करना चाह रहे होते हैं. So that's one of the reason. That is one of the reason why they're looking for it. ठीक है, so this is the basically four major reasons. So let's see what are the major clinical career pathways we have. So I have allocated 9 pathways here. You can see on the screen. We will discuss each of them in detail. So let them first verbalize each of them. First one is the medical writing and journalism, then pharma and medical affairs, that is affiliation program, and then healthcare consulting. Then we have health tech and digital health. Then we have
medical education and education edtech. Then we have hospital and health administration. Then we have medical legal consulting, public health and health policy and clinical research or CRO industry. These are the non-clinical, nine non-clinical career tracks that we will discuss in this session. Okay, the first one is the medical writing and journalism. I will not dive into the detail of each track. I will just give you the pros and cons of each track. Especially, I will focus on the positive side of each track so that you can easily identify your pathway or your line according to that. So, इसका क्या फायदा है? Medical writing and journalism. This is basically here we have the faida here that monthly you can earn 80k to 400k per month. Typical income range hai, and it not only includes the simple medical writing, it also includes continued medical education programs, that is CME. और आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अमेरिकन एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, वो हायर करती हैं थ्रू फाइवर फ्रीलांसिंग, और उसमें आपने एज ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस को या अथॉरिटीज को रेगुलेट करना होता है, जस्ट टू मेक द सिस्टम इन फ्लो, उसको रखना होता है. सो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल. आई विल डिस्प्ले ईच ऑफ द कार्ड्स like each track card on our YouTube and other Facebook and Instagram channels as well. So आप वहां से इनका ये complete opportunities को और entry pathways को पढ़ सकते हैं, like how will you dive into it, कैसे जा सकते हैं. Then the other advantage is fully remote. You can work from home in this option. And then we have the low barrier. Anyone can do it. Entry is difficult, but entry difficulty जो है वो low barrier है, like no, not a big deal now. Then we have the pharmaceutical industry and medical affairs. Basically इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेडिकल साइंस लेजन एक प्रोग्राम है जिसको हम MSL बोलते हैं. इसमें हम बेसिकली उन साइंसेस को और FDA अप्रूव्ड ड्रग्स को चेक करते हैं, ये देखते हैं, उनके एंगेजमेंट चेक करते हैं, साइंटिफिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं एज ए डॉक्टर. देन वी हैव ड्रग सेफ्टी, मेडिकल एडवाइजर, क्लिनिकल ट्रायल एंड हाई डिमांड. सो व्हाट वी कैन अर्न फ्रॉम हियर. So the total income range is, अगर इसका full potential इस्तेमाल किया जाए तो 150 to 600k per month है, and it is a hybrid field job, and the entry difficulty is moderate here. ठीक है. Then we have the healthcare consulting. Healthcare consulting is very related to the clinical. Almost जो सबसे ज्यादा सिमिलर नॉन क्लिनिकल पाथवे है वो यही होगा. इसमें क्या होता है, बेसिकली आपने वही कंसल्टेशन ही प्रोवाइड करनी है, बट नॉट directly to the patients but to the important NGOs, important World Banks, WHO projects, और different industries हैं, different institutions हैं, उसमें आपने अपने as a consultant काम करना होता है. ठीक है. So these are all here, and what you can earn here is 200 to 800k per month. It is the full potential job, like अगर आप total करते हैं. Then work flexibility is heavy travel इसमें शामिल है, और entry level is very difficult in it. ठीक है. Then we have the health tech and digital health. हेल्थ टेक और डिजिटल हेल्थ में आप चूंकि AI एफिलिएटेड चीज़ें आ चुकी हैं, तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह से डिवाइसेस होती हैं हमारी, उसमें हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लाइक क्लिनिकल प्रोडक्ट मैनेजर, मेडिकल एडवाइजर, टेलीमेडिसिन पर प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं और हार्डवेयर्स हैं, उनकी बेसिकली आ जाती है चीज़ें. एंड देन यू कैन फाउंड योर ओन कंपनी, स्टार्टअप, मेड टेक या हेल्थ टेक कंपनी आप बना सकते हो और फाउंडर बन सकते हो. एंड व्हाट यू कैन अर्न फ्रॉम हेयर 150k to 700k पर मंथ. ठीक है. एंड इट इज रिमोट फ्रेंडली फील्ड, एंड एंट्री लेवल इज मॉडरेट, नॉट वेरी फार. ठीक है. बाकी इसकी गाइडलाइन जो है वो हम एज आई हैव मेंशन कि वो इंशाल्लाह अपने पेजेस पे डिस्प्ले कर देंगे.
Then we have next option, that is medical education and ed tech, and it is very suitable as we have always seen our seniors, our teachers, our professors who are actually teaching us. तो उसी की alignment है basically ये in the form of the faculty and lectural roles, and you can do the online exam prep content for USMLE, MRCEM, MRCS, PLAB, FCPS, like that. You can build your own YouTube channel, like Medico 360 is one of the examples. Then you can design the curriculum, and you can do the उसकी training programs, books लिख सकते हैं आप, question bank and revision guides बना सकते हैं. तो इसमें जो है वो typically low range है 60K to 500K, और fully flexible job है, and the moderate level entry level is moderate, low and moderate. Then we have the hospital and health administration. This is fully approved thing. इसके लिए अलग से कोर्सेज होते हैं और उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी बनती है, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है यहाँ एंट्री पाथवेज में. बट द स्कोप एज ए ऑन इज, आप एमएस बनते हैं या फिर डीएमएस बनते हैं, उस पाथवे पे आप चले जाते हो. एनजीओ को आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो. फॉर एग्जांपल इसकी जो टोटल इनकम है दैट इज 150 to 600K विद द फुल पोटेंशियल. स्ट्रक्चर्स आर्ट्स हैं इसके और एंट्री लेवल इज मॉडरेट. Then we have the medical legal consulting. It is related to the forensic sciences, and you can do the independent medical expert witness, medical legal report writing, forensic medicine consultancy, malpractice and liability case review, health policy and medical ethics advisory work. And the work and the total income range is 100K से लेकर 450K तक. And it is the case based work flexibility, flexible, and entry level is moderate here. Then we have the public health and health policy. So basically we have roles with WHO, UNICEF, USAID, और उसके साथ आप एसोसिएट हो सकते हो. गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज हैं उसमें रोल प्ले कर सकते हैं एज ए पी टीपी MNCH है, जैसे मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स हैं उसमें आ जाते हैं. देन यू कैन utilize yourself in epidemiology, disease surveillance and outbreak से responsible. Then NGO है, इस तरह से health economics है, and the total income is in the USD. अगर इसको आप इसमें करें कन्वर्ट तो ऑलमोस्ट सेम तकरीबन 80K से लेकर 600K तक बन जाएगी. फील्ड वर्क है ये और मॉडरेट लेवल है ये, मोस्टली बाहर. Then we have the clinical research and CRO industry. क्लिनिकल रिसर्च और सीआरओ इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली एसोसिएट होती है, जिसमें क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स आते हैं, एंड वी हैव व्हाट वी हैव अदर. इसके साथ हमारे पास आते हैं कि साइट मैनेजमेंट है, रेगुलेटरी सबमिशंस हैं, एंड गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है, बायोस्टैट्स है, अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलती, सीआरओ या फिर IQ VIA वगैरह आइकॉन्स हैं, इस तरह की चीजें इसमें शामिल हैं. एंड इनकम रेंज इज 120K से लेकर 500K पर मंथ है. एंड द वर्क फ्लेक्सिबिलिटी इज हाइब्रिड एंड एंट्री लेवल इज लो मॉडरेट. ठीक है. सो दिस इज ऑल द कंपैरिजन टेबल जो हमने सारा अभी डिस्कस किया है, उसकी ही कंपैरिजन है, और उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वही है जो हमने अच्छे से किए थे. जैसे एंट्री लेवल हमने किया था, देन फ्लेक्सिबिलिटी को देखा था, और की क्वालिफिकेशन इधर मेंशन की गई है कि वो कौन कौन सी है. लास्ट में इनकम रेंज आप देख सकते हो. सो आई विल आल्सो डिस्प्ले दिस चार्ट इन आवर ग्रुप्स एज वेल, वेयर यू कैन इजीली check the comparison. So how you will align your roadmap to non-clinical career? First, assess yourself. After this session, ask yourself where you want to fit yourself in future. तो आपने ये पूछना है, उसमें उसके बाद एक्सप्लोर एंड शेडो, उस फील्ड को देखें, उस फील्ड में जाएं, उधर के बाकी डॉक्टर से बात करें. यू कैन कम टू अस एज वेल, हम आपको लिंक कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, बाकी चीजें आप वॉलंटियर करें. देन अपस्किल उसके कोर्सेज हैं, डिप्लोमा हैं, वो कंप्लीट करें. दैट बिल्ड योर पोर्टफोलियो, CV बिल्डअप करें, लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स बनाएं. देन नेटवर्क एंड अप्लाई, उसके बाद अप्लाई करें. दिस इज हाउ यू कैन गो टू द नॉन क्लिनिकल करियर. सो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं before your transition. Don't burn bridges.
बर्न ब्रिजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन क्लिनिकल पाथवे पे जा रहे हैं तो अपने कश्तियां मत जलाएं। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप जाएं जरूर, लेकिन अपना जो एज ए डॉक्टर पाथवे है, मेडिकल पाथवे है, उसको भी रिज्यूम रखें, उसको कंटिन्यूसली छोड़े नहीं, ब्रेक ना लें। देन ट्रांजिशन ग्रेजुअली, अगर आप फिर भी छोड़ना जा रहे हैं तो एकदम ट्रांजिशन के बजाय ग्रेजुअल ट्रांजिशन इज रिकमेंडेड। इसके बाद लोकल रेगुलेशंस को एक दफा चेक कर लें, फिर उधर जाएं, अदरवाइज यू विल फॉल ऑन द नीज। इसके अलावा देन लेवरेज योर एमबीबीएस। एमबीबीएस इज वेरी टफ, अगर आपने किया है तो उसको कैश करवाएं, ना कि अपनी दूसरी स्किल्स को, जो कि नॉन इम्पॉर्टेंट स्किल्स मैं कहूंगा अगर आप एज ए एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो सबसे ऊपर आएगा आपकी चीजों में। ठीक है, देन थिंक ग्लोबली, मैनी नॉन क्लिनिकल रोल्स आर देयर, उसमें आपको सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जिस पर आप जा सकते हो, और अच्छे से सच समझें और फिर पर्सनल ब्रांड अपना बिल्डअप करें, जिस तरह से आपको एक एग्जांपल मैंने अभी दी है। So the last, I will conclude my session with this beautiful line that your stethoscope opens more doors than the world. So you need to explore deliberately, upskill consistently, and build a brand around your expertise. That's all. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। अगर ऑडियंस में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।